हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉसलेस एंड लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन. And in the earlier lecture we have studied about the normalization concept, where the normalization concept is used to normalize the database by removing or by eliminating the data redundancy from the databases. And for this it has some rules which is divided into the normal forms: first normal form, second normal form, third normal form, Boyce code normal form, and the fourth normal form. So in case of lossless and lossy joint decomposition, the decomposition of a relation is done when a relation in relational model is not in appropriate normal form. जब रिलेशनल मॉडल में यानी RDBMS में जब रिलेशन नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, किसी अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है, तो उस केस में हमें उस रिलेशन को डिकम्पोज करना होता है. सो इफ़ वी डिकम्पोज ए रिलेशन R इंटू रिलेशंस R1 एंड R2, सपोज यहाँ कोई रिलेशन R है, उसे हमें डिकम्पोज करना है रिलेशन R1 एंड R2 में. तो जब हम उसे डिकम्पोज करते हैं, then there will be two possibilities. First one is the decomposition is lossy, and the second is the decomposition is lossless. So in the first case, the decomposition is lossy if the natural join or the join operation of relation R1 and R2 is not equal to original relation R. And the second is the decomposition will be lossless, means there will be no loss of information if the join operation of relation R1 and R2 is equal to original relation R. मीन्स जब हम ओरिजिनल रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं रिलेशन R1 एंड R2 में, देन अगर इन डिकम्पोज्ड जो रिलेशंस है R1 एंड R2, इनको जॉइन ऑपरेशंस के थ्रू फिर से ओरिजिनल रिलेशन रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं रिलेशन R, अगर वो इक्वली कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो उस केस में वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है. So to check for lossless joint decomposition, the following conditions must be satisfied. The first condition is that union of attributes of R1 and R2 must be equal to attribute of R. Means यहाँ रिलेशन R है, इसको हमने डिकम्पोज किया है इनटू रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2. So the union of attributes of R1 and R2 must be equal to attribute of R. Each attribute of R must be either in R1 or in R2. So the first condition is attribute of R1 union attribute of R2 is equal to attribute of R. And the second condition is intersection of attributes of R1 and R2 must not be null. Means दोनों में जो रिलेशन R1 एंड R2 है, इनमें एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट कॉमन होना ही चाहिए. एंड थर्ड इज common attribute must be a key for at least one relation, either R1 or R2. So this is the condition, this is the third condition, where the attribute of either relation R1 or R2 must be a key. जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा रिलेशन R1 एंड R2 में, वो कॉमन एट्रीब्यूट एक की एट्रीब्यूट होना चाहिए, चाहे वो रिलेशन R1 का हो या फिर R2 का हो. So the lossless joint decomposition. The decomposition in DBMS removes data redundancy, anomalies and inconsistencies from a database by dividing the table into multiple tables. So in lossless decomposition, the decomposition is lossless if it is feasible to reconstruct the original relation R from the decomposed relations using joins. This is the preferred choice. The information will not lose from the relation when decomposed. The join would result in the same original relation. Let us see an example. ये यहाँ एक रिलेशन है EMP information, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एक रिलेशन है जिसको हम रिलेशन R इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है, देन इसमें 6 एट्रीब्यूट्स है: एम्प्लॉय ID, employee name, employee age, employee location, department ID and the department name. This is the original relation R which is known as employee information. और अब हम इस रिलेशन को employee information रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं. यहाँ हम
ओरिजिनल जो रिलेशन है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इसको आर डिनोट कर देते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स एंड डिपार्टमेंट डिटेल्स में, जिसको हम R1 और R2 से डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो जब हम ओरिजिनल रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं रिलेशन R1 एंड R2 में, तो यहाँ R1 है एम्प्लॉय डिटेल्स एंड R2 है डिपार्टमेंट डिटेल्स। तो इस डिकम्पोज्ड रिलेशंस को फिर से जॉइन ऑपरेशन के थ्रू जब जॉइन ऑपरेशन इन पे अप्लाई करते हैं और इनसे ओरिजिनल रिलेशन फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स रिलेशन R1 अगर फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इनसे R1 एंड R2 से ओरिजिनल रिलेशन R अगर रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो अगर ओरिजिनल रिलेशन इन दोनों रिलेशंस के जॉइन ऑपरेशंस के इक्वल होता है, दैट मीन्स देयर विल बी नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड फॉर दिस इन दोनों टेबल्स में रिलेशन R1 एंड R2 में एक कॉमन एट्रीब्यूट का होना बहुत ज़रूरी होता है, देयर मस्ट बी ए कॉमन एट्रीब्यूट। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो है वो दोनों रिलेशंस में कॉमन है। एंड इन एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय आईडी इज़ ए प्राइमरी की। सो व्हेन वी अप्लाई द जॉइन ऑपरेशन ऑन एम्प्लॉय डिटेल्स एंड डिपार्टमेंट डिटेल्स, then it reconstruct the original relation R. Suppose it is R1 and it is R2, and we apply the join operation on these two relations, then it reconstruct the original relation R, and which is employee information. So now natural join is applied on the above two tables and the result will be दिस वन एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। मीन्स जो डिकम्पोज टेबल है उनसे हमने फिर से ओरिजिनल जो रिलेशन आ रहा है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया विदाउट लॉस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। सो देयरफॉर द अबाउ रिलेशन हैड लॉसलेस डिकम्पोजिशन, मीन्स देयर विल बी नो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज नोन एज लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। द नेक्स्ट इज लॉसी डिकम्पोजिशन. As the name suggests, when a relation is decomposed into two or more relational schemas, the loss of information is unavoidable when the original relation is retrieved. मीन्स जहाँ लॉसलेस डिकम्पोजिशन में हमने जो डिकम्पोज रिलेशंस है, मीन्स जो R1 रिलेशन है इसको डिकम्पोज किया हमने R1 एंड R2 में, एंड जब R1 एंड R2 को जॉइन ऑपरेशन के थ्रू फिर से ओरिजिनल रिलेशन R रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो उस केस में जब इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं हुआ, दैट इज़ नॉन एज लॉसलेस डिकम्पोजिशन। बट जब इन दोनों रिलेशन को जॉइन ऑपरेशन के थ्रू जब ओरिजिनल रिलेशन रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उस केस में अगर इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है, देन दिस इज़ नॉन एज लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन, एंड द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अनअवॉइडेबल व्हेन द ओरिजिनल रिलेशन इज रिट्रीव्ड in the case of lossy decomposition. So let us see an example here. This is employee information and we can denote it original relation R. Okay, and it has 6 attributes: employee ID, employee name, employee age, employee location, department ID and the department name. So now we decompose the original relation employee information into employee details and department details. So when we decompose the original relation into these two relation, then the first is employee details and second is department details, and we can see here there is no common attribute between these two tables. यहाँ employee details में और department details इन दोनों relations में कोई भी common attributes नहीं है, means it doesn't meet the second condition where हमने यहाँ पढ़ा था इन द सेकेंड कंडीशन इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2 मस्ट नॉट बी नल, मीन्स दोनों टेबल्स में कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट तो होना चाहिए। बट इन केस ऑफ लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशंस में इन दोनों टेबल्स को जब हमने डिकम्पोज किया, जब ओरिजिनल टेबल्स को इन दोनों टेबल्स में डिकम्पोज किया, तो यहाँ कोई भी एट्रीब्यूट्स कॉमन नहीं है इनके बीच में। सो you won't be able to join the above tables since employee ID is not part of the department detail relations. So therefore the above relation has lossy decompositions. In simple word we can say if relation R को अगर R1 and R2 में decompose करते हैं and again R1 and R2 को join operations के through again इनसे हम original relation reconstruct करते हैं, तो उस केस में अगर information का loss नहीं होता है,
तो उसे हम लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन बोलते हैं. एंड इफ देर इज सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, in that case this is known as the lossy joint decomposition.